Hi, I'm Niharika Nanda and you are listening to Express Podcasts. Imagine the last time you were choosing a restaurant to grab a meal. You probably scanned through online reviews on food quality and ambience. But did you notice one thing? There were no ratings for hygiene standards in the kitchen. That's because that information is usually hidden from diners. Now imagine if that information was publicly available. Customers would choose differently and restaurants would focus more on cleanliness. The same analogy could be applied for schools. Information on learning quality being accessible for parents. Most parents are engrossed in looking at school facilities and infrastructure, but the most important part, the learning quality information in classrooms, remains hidden. In the third episode of our 5-part series in association with Central Square Foundation, we are going to talk about one of the most powerful reforms in education, public disclosure of school learning quality data. If school-level learning data was made public, parents could ask the schools the right questions on learning quality and also choose wisely which school to send their children. And in turn, schools would be encouraged to improve what matters the most. That is, the learning quality. This is exactly what the National Education Policy or NEP 2020 envisions. And gradually we are seeing that states like Gujarat are beginning to act on it. Joining me in today's conversation are two guests who are at the heart of this change. Kapil Khurana, Associate Director for School Governance at Central Square Foundation, and A.K. Modh Patel, Additional Director, GCERT Gujarat, who is leading Gujarat's effort to disclose school learning quality data through the School Quality Assessment and Assurance Framework, or SQAAF, a set of standards for all schools. Parts of this conversation are going to be in Hindi. Kapil, let's start with you. Parents, communities, and even policymakers often don't have clear or comparable information about how schools are performing, especially with respect to learning. Why is this information gap such a big problem when it comes to improving school quality? See, if a parent is sending their child to a school for years, they deserve to know what the school is actually delivering to them. But today, whether it's a government school or private school, the focus is usually on what is obvious, the facilities, the fees, the exam results, particularly of board exams. But the real purpose of attending school is to see whether children are learning in all the grades or not. But that information remains hidden, especially when a parent is looking for a school for their younger children. And when something is invisible, there is no accountability. Think about how we rate our other things like air conditioner. They come with Energy Star ratings. Cities are today ranked on Swachh Sarvekshan for cleanliness. Even villages now know their Jal Jeevan mission coverage. So these benchmarks create healthy competition to improve. But in schools, there is still no way there is a comparable benchmark, and that can tell us about learning outcomes, especially in early grades. So result is misplaced investments. Schools often spend on visible infrastructure that looks good instead of improving classroom teaching and learning. So if outcomes of learning are made visible, just like the other ratings, the incentives would finally shift back to children's learning. So that establishes that there exists a critical information gap when it comes to information on learning levels data in school education. And Kapil, one proposed solution under the NEP 2020 is public disclosure of school performance data. Can you explain what this is and how it works in practice? See, this public disclosure is really about taking the information that schools already have and making it simple, visible, and accessible for our parents and communities. Today, most of the learning level or quality data stays logged inside the system, or it surfaces only at the district or state level, which is not useful for a parent deciding which school to send their child to. So in practice, disclosure means creating a school-level report card that shares the most important information about the school with the parents. Are children in the school learning at the level expected for their grade? What is the student-teacher ratio? Are teachers qualified? Etc. Now, the point isn't to overwhelm people with a lot of information, but to highlight the core indicators that matter to ensure the children are actually learning. We have seen this with the surveys like Parakh Rashtriya Sarvekshan, where results were published at the district level and the state level. So states took action to improve based on those results. Imagine the same happening not at the elusive state level or district level or even block level, but at the school level. Communities would be activated,
schools doing well will become models, and the entire system then would have to focus on what really matters, the student learning. राइट एंड पटेल सर, अब आपसे बात करते हुए, गुजरात उन पहले राज्यों में से एक है जो स्क्वाफ के जरिए स्कूल क्वालिटी डेटा शेयर करने जा रहा है. क्या आप बता सकते हैं कि इस इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे गुजरात की क्या सोच रही है और ये कदम स्कूल्स और पेरेंट्स के लिए किस तरह का बदलाव ला सकता है? हमारा ये मानना है कि एजुकेशन क्वालिटी में शिक्षा संबंधित सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स है और अदर जो फैसिलिटीज है, लेबोरेटरीज है, ये होना जरूरी है. और पर्याप्त जो टीचर्स है, ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित टीचर्स, ये भी होना जरूरी है. लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का सही मानक है कि बच्चे सच में सीख रहे हैं या नहीं. इसी सोच से 2009 से गुजरात में गुणोत्सव, स्कूल क्वालिटी सेलिब्रेट करने का एक उत्सव, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया और जिसमें बाद में उसके स्कूल एक्रेडिटेशन के स्वरूप में उसको अपग्रेड भी किया, जिसे हम गुणोत्सव 2.0 भी बोलते हैं अभी, जिसमें स्कूल्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एसेस किया जाता है. और हमने 24-25 में स्कूल एक्रेडिटेशन रिपोर्ट को पब्लिकली अवेलेबल करवाया है अभी. अब स्कूल एक्रेडिटेशन की नई साइकिल जो 25-26 में आ रही है, उसमें NEP 2020 में जो रिकमेंडेशंस किए हैं उसके अनुरूप और भी बेहतर और पब्लिक के लिए एसेस करना और समझना ज्यादा सरल हो, ऐसे स्वरूप में पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ शेयर करने का हम प्लान कर रहे हैं. आइडिया बहुत सिंपल है. अगर स्कूल के क्वालिटी इंडिकेटर्स पब्लिक हो जाते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों को स्कूल की सही पिक्चर मिलती है, जानकारी मिलती है उसमें, और स्कूल को भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलते हैं. उन्हें साफ दिखेगा कि कहाँ मजबूती है और कहाँ सुधार की जरूरत है. तो यह एक ऐसा कल्चर बनाने की और कदम है जहां फोकस बच्चों की लर्निंग पर हो, सीखने सिखाने पर हो, नॉट के सिंपल कॉम्प्लायंस पर हो. एंड कपिल, कमिंग बैक टू यू, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 actually places a strong emphasis on public disclosure of school performance. If states implement it seriously, what would it mean for how our school system functions? So, the National Education Policy 2020 makes transparency and accountability the central pillars of school reform. It calls for every state to set up something called a State School Standards Authority, or SSSA, that would define clear quality benchmarks for schools and regularly make information of school performance public. Importantly, this is not just for government schools, but for all schools that you as parent can potentially send your children to, including private run institutions or minority institutions or aided schools or anything that you may want to call as school around you. If states take this seriously, it would be a major shift. For the first time, parents would have verified, comparable information on school quality, not just on the glossy brochures or the word of mouth that they rely on. In the absence of such information, schools would be judged on whether children are actually learning. Policymakers would also get much sharper insights into whether the system is doing well or not and where support is needed. So in effect, it would move our system from a culture of compliance and inputs, especially schools, like questions which get asked to them are, do you have a playground or not? Do you have a library or not? These are not bad questions, but the right questions to also ask are on outcomes and accountability, whether children in your school are learning or not, where learning is at the center. Now, this is a big transformation and one that could redefine how schools operate across our country. पर अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे. पटेल सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब स्कूल लेवल डेटा पब्लिक होगा तो आपके हिसाब से टीचर्स, स्कूल लीडर्स और पेरेंट्स में किस तरह का बदलाव आएगा? हमारा मानना है कि स्कूल क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो पब्लिकली हो जाते हैं तो टीचर्स, स्कूल लीडर्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उसका सभी का ध्यान जो है ऑटोमेटिकली बच्चों की लर्निंग पर बढ़ने लगता है. पेरेंट्स को एक आवाज मिलती है, उनकी समझ बढ़ती है. अब वो सिर्फ फैसिलिटीज की ओर देखने के बजाय स्कूल को ऐसे चुनेंगे कि वहाँ एजुकेशन क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये भी विचार करेंगे कि क्या मेरा बच्चा या बच्ची इस स्कूल में सच में सीख रहा है या सीख रही है. इसके स्कूल के सही मायने में एजुकेशन क्वालिटी कैसी है वो पर्टिकुलर स्कूल की, वो पेरेंट एसेस कर सकेंगे. और समय के साथ जो ट्रांसपेरेंसी है स्कूल, पेरेंट्स और गवर्नमेंट के बीच, एक ट्रस्ट भी बढ़ाएगी, क्योंकि पब्लिक को भी लगेगा कि सब इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिकली अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट को भी साथ जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो भी बढ़ेगा. और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सबके पास होगी तो हमारा मानना है कि एक जो ट्रस्ट है एक्चुअली बढ़ेगा पब्लिक का. और पटेल सर,
जब भी कोई नया इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सेटल होने में और रिजल्ट्स दिखाने में कुछ समय लेता है। आपको क्या लगता है कि स्कूल डेटा पब्लिक करने में कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? यह सच में एक बड़ा बदलाव है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो बदलाव आ रहा है अभी। तो उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही, हमारा भी मानना है कि चैलेंजेस उसमें आएंगे। पहली जो चैलेंज है वो है डेटा क्वालिटी, क्योंकि डेटा जो है उसका असेसमेंट मजबूत और क्रेडिबल होने चाहिए, नहीं तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो बेकार हो जाएगी। तो पहला चैलेंज है क्वालिटी ऑफ डेटा। दूसरा जो चैलेंज है कम्युनिकेशन, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन साफ और सरल फॉर्मेट में मिलनी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि भाई पर्टिकुलर स्कूल का इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली पूरी समझ में आना चाहिए। तो ये उसका फॉर्मेट सरल होना चाहिए, एक यही चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज है वो स्कूल्स को ये समझना है कि उन्हें जज नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये टूल है उनके सपोर्ट और इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो टूल बन रहा है वो उसके सपोर्ट के लिए है और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। तो ये बात जो है वो एनईपी में भी 2020 में भी बताया है कि ये ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जैसे स्कूल को भी पता चले कि जैसे उसको वीकनेस कहाँ है, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए उसको सुधार मिलता है और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएगी स्कूल्स की। टीचर्स और जो अदर स्टेक होल्डर्स है उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, वे भी एक चैलेंज है, क्योंकि स्कूल जो ऑफिशियल्स है, स्कूल के टीचर्स है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उन सबको एक ट्रेनिंग, पूरे मास को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट है, वो भी एक चैलेंज होगा, वो हमारा मानना है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो इफेक्टिवली हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि SCART के पास जो है ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो SCART कर रही है गुजरात में, तो वो हम कर सकेंगे। हम गुजरात में ये शुरुआत करने जा रहे हैं और धीरे धीरे स्केल करके करेंगे पूरी सिस्टम को और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो चैलेंजेस तो आएंगे ही, नया काम है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही। There are challenges, but over time, it definitely will get better. And Kapil, what would you tell a parent listening today about how they can use publicly available school data to make better educational choices for their children? So for the parents listening today, I'd say this. When school data is made public, it gives you the chance to ask important questions about the overall quality of education in your child's school. जैसा कि पटेल सर ने भी कहा, if you ask about your school's plan for improvement, if the results show stronger areas as well as weaker areas, the right question to raise with principals and teachers would be, what steps are being taken to strengthen learning in our school? And if you have the means to exercise choice, this information can also guide you in selecting the right school that matches what you value the most, whether that's stronger learning outcomes or better teaching support or overall quality. When you as parents use this information to start conversations with principals, teachers, and school committees, that sends a clear message that learning quality matters. And that message, repeated again and again across communities, is what will push the schools and the system to improve. You were listening to Kapil Khurana and A.K. Modh Patel in the third episode of our 5-part series in association with Central Square Foundation. If you want to listen to the first 2 episodes, you can find the links to the same in the description. This episode was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Niharika Nanda. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts or write to us at podcasts@indianexpress.com.